Hello, guys. So we are back again with another live stream uh, after yesterday's stream. So maybe you guys have joined yesterday's stream. If not, it's on our all our platforms like LinkedIn, YouTube, and Twitter. So you can go and check out the special stream that we did yesterday about Binance and about the future of exchange in the coming days. So today I think we'll mostly discuss about the other things that we generally do over the week, about the latest hacks, latest negative news, and are we expecting a pump or a dump right now? So without further ado, we'll start. But if you are new to the channel and if you have not subscribed yet, or if you are watching it for the first time, do like, share, and subscribe to all our social media platforms wherever you are watching from. And if you have any questions in between the session, you can just put it up in the comments box and we'll take it up. And it may not be related to this week, but any questions that you have on the crypto space, we are happy to take it. So, coming up with the first news, I think, Chris. So, what's today in our news ki jholi? सो Every week I have a day of news. So, सो हर हफ्ते हम लोग बाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ बोलते ही है तो आई थिंक येस्टरडे वी हैड अ वेरी लॉन्ग yeah, कॉन्वर्सेशन कि कैसे एक्सचेंजेस सेटअप हुए बाइनेंस ने क्या किए क्या उनका गलती था एक्सेट्रा सो सबको पता ही होगा अब तक कि बाइनेंस हैज़ एंड सीजी ऑल्सो हैज़ decided to settle with the US Department of Justice and some other departments. तो अभी बाइनेंस के जो सीईओ है सीजी ही इज़ इन यूएस सो ही इज़ एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ यूएई दुबई एंड अभी उनको यूएस से निकलने के लिए यू नो द government bodies they want to the prosecutors they are claiming that she is a serious flight risk क्योंकि अगर वो यूएस के बाहर चले जाते हैं तो देन यूएस के साथ उनका कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है यूएई का तो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट बैक टू यूएस पर ये एक भाषा से जुमला है क्योंकि सीजी ऑलरेडी वाज इन द मिडिल ईस्ट एंड उन्होंने खुद जाके यूएस में सरेंडर किया है एंड ही वांटेड टू सेटल तो मुझे नहीं लगता कि लाइक सीजी वुड हैव डन इट अगर he did not want to do it himself. So basically, yes, he is a flight risk क्योंकि वो उनके पास जैसे सैम के पास काफ़ी सारे पैसे थे, काफ़ी सारे entities थे. So there are chances he will influence a lot of things. But in इस case में already he has accepted that he would settle. तभी वो US आए थे, right? So he has already signed some documents. So that's something which is not going to happen. But for the sake of things, they're just trying to claim that he should not leave the country. I think Krish, I also So, read yesterday that he's also he has also filed for that 150 million bailout. And other than that, he has put up around 50 million into some account, wherein if he is not coming back, it will be taken up by the तो government, and other things can वो तो happen. एस्क्रो अकाउंट है तो ऑफ कोर्स Yeah, पैसे लेके $50 million का फाइन लेके nobody is telling कि सीसी will pay or pay not pay. The point is like if he is prosecuted or like criminally prosecuted तो उनको 1 से 1.5 साल का मतलब करीब करीब 1 डेढ़ साल का जेल टाइम हो सकता है तो right. उन्होंने कहा है कि अगर 18 मंथ्स के नीचे जेल टाइम होता है ही विल नॉट फाइट सो एटलीस्ट 18 मंथ्स तो prosecutors will try to get him into jail right and up to 10 years तो अगर उससे ज़्यादा होता है he will fight so prosecutors will put them in jail for like 17 months like that is what they want तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि सीसी goes out of the country so that is the point. Money is not the issue here. Like $50 million or $175 million is not an issue here. तो इसके साथ हम लोग चलते हैं टेदर के ऊपर दो न्यूज़ एक तो है कि टेदर हैज़ फ्रीज $225 million amid DOJ investigation due to pig butchering with OKX. तो OKX एक एक्सचेंज है पिग बुचरिंग एक टेक्निक होता है जहाँ पे एक लड़की आपको कांटेक्ट करता है शी स्टार्ट चैटिंग विथ यू वॉइस कॉल एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड फिर आपको सिखाता है कि किस तरीके से
INR या ताइवान डॉलर या कुछ डाल के यू कैन बाय USDT एंड यू मूव द USDT टू OKX एंड वहाँ से दे स्टार्ट कंट्रोलिंग योर buy and sell. And how they do it कि वहाँ से OKX से also they send you to send this money to a scam exchange. तो OKX क्यों? क्योंकि OKX में it's easy to create accounts, उनका KYC AML उतना strong नहीं था, and that's why they got into this trouble. So OKX has started working, and they've frozen $225 million. Mind you, these are not uh, wallets on OKX. So these are like MetaMask wallet or Trust asset, Trust wallet, etc. तो डायरेक्टली टेदर ने खुद इसको ब्लॉक किया है एंड सेम I think थिंग this is like very good use case of bringing people into crypto. नहीं Ultimately, they are bringing adoption, but in the wrong way. अल्टीमेटली क्या होगा कि लाइक यहाँ पे भी और एक केस है कि यहाँ पे $9 million हैज बीन ब्लॉक. तो आपको ये समझना चाहिए कि USDT एंड USDC जो आप यूज कर रहे हो दैट कैन बी ब्लॉक्ड एनी टाइम. लाइक अगर आपके मेटामैक्स वॉलेट में भी है, अगर टेदर चाहे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है. यू कैन नॉट मूव दिस मनी. तो दैट इज व्हाट दे हैव डन हियर. तो USDC के साथ भी सेम केसेस ही है. लाइक इफ दे वांट दे कैन ब्लॉक योर मनी. So USDT, USDC are not decentralized, right? So that's why you can do it because it's just a contract, and any wallet which is tied to a smart, like, tied to a wallet, you can just freeze it. So that is what is happening here. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग मूविंग फॉरवर्ड. अगर तेदर खुद इस तरीके के स्कैम्स को सपोर्ट करना बंद कर देता है तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दी स्कैमस्टर्स जिनके इतने सारे पैसे अटक गए हैं दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्योंकि सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू गेट कॉट. एंड जब उनके पास पैसे भी नहीं होंगे दे आर गोइंग टू गेट कॉट मच फास्टर. दैट इज द पॉइंट. तो जैसे मैंने कल कहा था कि ऑफ कोर्स SEC will start suing other crypto companies, but they will not be going after them as badly. तो यहाँ पे SEC ने ऑलरेडी क्रैकन को कुछ अनरजिस्टर्ड कॉइन्स एक्सेट्रा लेके कहा है. बट जो सीरियस एलिगेशन है वो है कि क्रैकन ने यूजर फंड के साथ कंपनी फंड्स को मिक्स एंड मैच किया है, विच इज़ अ बिगर इशू हियर. तो आई थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी एंड सभी एक्सचेंज करते हैं. तो आई थिंक लाइक क्रैकन प्रोबेबली वुड हैव डन इट मे बी इन द लास्ट 5 years sometime कि गलती से ही सही बट दे हैव पुट यूजर फंड एंड देयर मनी टुगेदर. सो इन US यू कैन नॉट डू दैट. इंडिया में तो खैर बहुत लोग करते ही हैं. यूजर मनी प्लस ओन मनी दे पुट टुगेदर इन द सेम वॉलेट एंड ट्रेड. INR के साथ भी सेम केसेस ही है. सो इसके अगेंस्ट में कॉइनबेस ने ऑलरेडी एक पिटिशन डाला हुआ है कि वो चाहते हैं कि न्यू क्रिप्टो रूल्स आर वेरी क्लियर. तो कॉइनबेस के साथ पंगा ये हुआ कि जब उन्होंने लिस्ट करना चाहा अपने स्टॉक को, तो उस टाइम में दे हैव गॉन थ्रू विद SEC रिगार्डिंग देयर बिजनेस मॉडल, क्या क्या टोकन्स उन्होंने लॉन्च किया है, क्या उनका फ्यूचर प्लान्स एक्सेट्रा. एंड देन सडनली SEC ने आके उनको बोला कि लाइक यू आर putting in some coins which are securities, which are not utility tokens etc. or not even like assets. तो इसीलिए Coinbase ने ये कहा है. एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि नाउ Coinbase and Kraken and other companies Bitmax etc. goes after it and get a proper regulation in the US. क्योंकि जब US में regulations आएंगे तभी जाके बाहर कहीं पे regulations मतलब उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ऑल्दो रेगुलेशंस आर देयर इन जापान एंड सिंगापुर, UK, यूरोप एक्सेट्रा, बट जब तक बिग ब्रदर मूव नहीं करता है तो आई थिंक ऑल द अदर ब्रदर्स आर नॉट गोइंग टू बी रियली सीरियस अबाउट इट. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड amidst all the bad news, I think ये भी एक बैड न्यूज ही एक तरीके से. तो डिजिटल करेंसी ग्रुप ने अपना सबसे प्राइस्ड एसेट और वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड एसेट आई वुड से कॉइनडेक्स को सेल कर दिया है. बुलिश बोल के एक एक्सचेंज है. तो बुलिश का जो ओनर है ही इज द फॉर्मर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट टॉम फार्ली. सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक हु इज रनिंग दिस एक्सचेंज. सो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि किस तरीके से मार्केट अभी इन्फ्लुएंस्ड होगा. क्योंकि इफ यू आर एक्सचेंज एंड यू आर ओनिंग biggest media company and your exchange's
CEO is former New York Stock Exchange president. So you can understand like now institutions can easily move markets. तो अगर वो चाहेंगे कि मार्केट को फॉल करना है, दे आर ओनली गोइंग टू पुट बैड न्यूज़ इन द मीडिया. अगर वो चाहेंगे कि मार्केट को ऊपर उठाना है, दे आर ओनली गोइंग टू बी गुड मूव्स. एंड नॉट टेलिंग एनीथिंग बैड अबाउट बुलिश, बट बुलिश के साथ भी अगर कुछ खराब न्यूज़ आता है, सो प्रोबेबली दैट विल नॉट बी कवर्ड और नॉट बी कवर्ड एज हेविली. जैसा होता है ना, फुटप्रिंट में डाल दिया जाता है, तो दैट न्यूज़ विल बी कवर्ड लाइक अ फुटप्रिंट. तो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द क्रिप्टो मार्केट, एंड दिस इज अ क्लियर साइन कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट होगा आगे. Don't you think Krish, like कि इसके बाद people जो इतना ट्रस्ट करते थे Coindesk को, the कॉइन डेस्क bias को will be yeah, the bias will be relatively lower right now कि लोग अब उतना उसको follow नहीं करें because they already know in the back end that it's been controlled by some other नहीं, exchange which can be डिजिटल used. करेंसी डिजिटल करेंसी ग्रुप भी जब इसको कंट्रोल कर रहे थे, तो दे डिड नॉट कवर एज मच बैड न्यूज अबाउट देमसेल्व्स, बट एक्चुअली दे शुड हैव. सो इट वाज नॉट कंप्लीटली अनबायस्ड. तो अगर कोई पेरेंट कंपनी है, सो ऑफ कोर्स यू विल बी सर्टेनली सर्टेन बायस विल कम इन, राइट, Mhm. नो मैटर व्हाट. तो दैट इज गोइंग टू हैपन. एंड नॉर्मल यूजर्स के लिए क्या है कि अगर उनको ये न्यूज़ नहीं भी पता चलता है कि हु इज ओनिंग कॉइन डेक्स, तो उनको पता भी नहीं रहेगा लाइक हु इज बुलिश एक्सचेंज, राइट. लाइक आपने इसके पहले नाम सुना था बुलिश एक्सचेंज का? आई डोंट No, थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एवर हर्ड ऑफ दिस एक्सचेंज बिफोर. no. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स कि somebody at the exchange has previous experience of running stock exchange. New York Stock Exchange is quite a big stock exchange. So now running a crypto exchange on those lines will bring the same kind of security for the normal user. So that is what is needed, right? एंड फिर आते हैं हम लोग दो न्यूज़ पे. एक है जस्टिन सन का एक और Chronology. एच टी एक्स गॉट हैक्ड. तो क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहले पोलोनिक्स हुआ, तो आई थिंक उसके बाद वो भी होगा या हो चुका है. then HTX, then probably BTT token like BitTorrent token, and then finally Tron. So rug pull का जो सीजन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, because I think if he gets caught, so he has to also deposit certain amount of money, and Mhm. he has to liquidate it somehow, right? तो थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. तो अभी हम मैंने अभी ट्विटर में काफ़ी सारे लोगों का वो फ्रस्ट्रेशन देखा है कि पोलोनिक्स ने उनके फंड को लॉक कर दिया है, एंड यू नो दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग. जस्टिन सर ने इमीडिएटली कहा था कि यू नो वी विल पुट 100 मिलियन 125 मिलियन बैक इन द यूजर फंड. तो यूजर फंड को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर इट हैज़ ऑलरेडी बीन आई थिंक 1 वीक, ओवर 1 वीक उनका हैक हुआ है. एंड yeah, there's no communication, so which is not a very good sign. And communication wise, this is also very shocking news. Bittrex Global, जो कि काफ़ी बड़ा exchange था in the last to last bull run, they are going down. तो जैसा प्रेडिक्ट किया गया था कि बहुत सारे exchanges will go down because they don't want to get in a position like Binance कि they try to comply and regulate themselves, but because of their activities 5 साल पहले, the Department of Justice or US SEC, etc., starts putting cases against them. So instead of fighting and trying to do something in the regulated space, a lot of these exchanges will rather shut down and go on chain and try to do some DeFi project और रीस्टार्ट अगेन. बिकॉज अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका लाइबिलिटी बहुत कम होता है. सो इफ बिटरेक्स क्लोजेस डाउन एंड आस्क ऑल द यूजर्स टू टेक देयर मनी बैक, तो दे कैन टेल द गवर्नमेंट कि हाँ हमने इस टाइम पे ऑपरेट किया था एंड इस टाइम तक आपने कोई नया लॉ नहीं लाया था, सो दैट्स व्हाई वी क्लोज्ड एवरीथिंग डाउन. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड नाउ वी विल फॉलो ऑल दोस थिंग्स. सो that is what is happening in the market today, at least in the centralized space. So now I think I'll give the mic over to Shovik to discuss some chart patterns and hopefully some good news as well. Pump and dump scenarios. तो बेसिकली इस वीक में जो करेंगे ना, इस वीक में डायरेक्टली उस तरह से एनालिसिस नहीं करके एक्सपेक्टेड सवाल जो है वो यूजर्स का क्या आ सकता है इस मार्केट में या फिर इस मार्केट कंडीशंस में. सैम, आपको क्या लगता है कि मतलब यूजर्स के मन में क्या क्या सवाल आ सकता है मार्केट में, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? वो सब चीज थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली.
तो एक सवाल तो मैं जो हर समय पूछता हूँ वो तो आता ही है कि from the investment point of view, December is not considered as a very good time to, बहुत ऊपर नहीं जाता है मार्केट, बट अभी जैसे न्यूज आया, बट स्टिल मार्केट इज टेकिंग दैट लेवल्स, मतलब थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस आ गया है। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी भी देयर इज अ चांस टू गो डाउन दिस दिसंबर इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, या फिर वी आर गोइंग टू मूव अप बिफोर द एंड ऑफ एक्चुअली दिस ईयर? सैम यहाँ पे जो है ना ये बिनांस का जो न्यूज़ था ये काफी बड़ा ब्लो था, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब ये बहुत दिनों से मतलब पता था कि इस तरह से कुछ होने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली जब न्यूज़ आता है ना तब पैनिक सिचुएशन मार्केट में बनता है। लेकिन आप अगर गौर से नोटिस करोगे तो फिर इस पैनिक सिचुएशन में भी मार्केट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया है। नहीं तो आप खुद सोचो कि जब चारों तरफ सोशल मीडिया में ये हल्ला मचा हुआ था कि मतलब इसका जो है ना एफटीएक्स के साथ कंपैरिजन हो रहा था, तो कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कहाँ-कहाँ पे डिफरेंस है। एफटीएक्स जैसा मतलब जो डोमेन में था या फिर जिस तरह से वहाँ पे स्कैम हुआ था, बोल सकते हो कि उस तरह से नहीं है बिनांस में, ये सिनेरियो थोड़ा-सा अलग है। तो फिर यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि जैसे न्यूज़ आया, तो मेजर फॉल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो हम लोग रिसेंट सपोर्ट या फिर एक बेस मान सकते हैं वो है 32,000, 32,000 ये जो एरिया है ये जोन, तो उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है इतना बड़ा न्यूज़ के बाद। तो जब इस तरह का कोई मतलब सिचुएशन होता है और मार्केट उस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है, तो आप ये समझ जाओ कि मार्केट जो है वो काफ़ी मतलब मैच्योरिटी एक लेवल की तरफ जा रहा है और एक्यूमुलेशन जो है वो एक्यूमुलेशन धीरे-धीरे चल रहा है और इंस्टीट्यूशंस जो है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये सब न्यूज़ के चलते कि उसमें मासिव सेल ऑफ आ जाए या फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। हम लोग अगर डेली चार्ट पैटर्न यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, तो फिर एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो फॉल था ना, ये वाला, ये कैंडल का, तो आप इसको भी मान सकते हो कि इस तरह का फॉल हुआ है, तो ये बहुत ही माइनर फॉल है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रीवियसली एक चार्ट पैटर्न को देखते हैं, जो कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न, तो उसके तो आसपास भी नहीं आया हुआ है और रिसेंटली अगर शॉर्ट साइड में कोई प्ले करना भी चाहता है, तो वो फिर काफ़ी रिस्की इस पॉइंट पे होगा। कन्विंसिंगली वो शॉर्ट पे कब बैठ सकते हैं, जब ये जो मतलब ये जो एक्युमुलेशन ज़ोन है ना, इसके नीचे पूरी तरह से आ जाएगा, जिसका चांस अभी काफ़ी कम है, ठीक है। तो उस तरह से क्योंकि यहाँ पे और एक चीज़ हुआ था, ये जो है ना इस तरह का पैटर्न बना है, तो इसमें जो है ना ये काफ़ी लंबे टाइम से इसमें एक्युमुलेशन चल रहा था। तो अभी इसको वापस से नेगेटिव डोमेन में लाने के लिए क्या होगा, पहले ये जो एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको तोड़ के फिर इस चैनल के अंदर घुसना होगा। इस चैनल में अगर घुस के स्टे करता है तो फिर इधर जाने का चांस है। अगर नहीं होता है ऐसा कुछ सिनेरियो, तो फिर यहाँ से जो है ये छोटा-छोटा कैंडल बना के फिर तैयारी चल रहा है। आप ये बोल सकते हो कि ऊपर जाने का जो तैयारी है ना, इसी तरह से बनता है। एकदम से झट से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 37 टू 40,000 जो ज़ोन है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और रेजिस्टेंस के पास आके ये रुका हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे तैयारी कैसे बन रहा है कैंडल्स। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा-सा एक बार अच्छा सैम, आपका जो सवाल था दिसंबर, तो यहाँ पे लिक्विडिटी इश्यू तो दिसंबर में रहता है, तो इसीलिए कैंडल्स भी आप जब देखोगे तो मेजर कुछ न्यूज़ आएगा तो ही कैंडल्स बड़ा-बड़ा बनेगा, नहीं तो फिर छोटा-छोटा कैंडल्स ही बनेगा। उसका बॉडी होगा वो काफ़ी छोटा होगा, वीक होगा, वो भी उतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना छोटा-छोटा बॉडी बन रहा है। मेजर बॉडी बना था यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का बॉडी बनने के लिए शॉर्ट कवरिंग रैली का स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इतना बड़ा बॉडी नहीं बनेगा। और रिटेलर्स का प्रॉफिट तभी बनता है जब इस तरह का कैंडल बनता है, क्योंकि इस तरह का कैंडल बनने के बाद यूजुअली उसका फॉलो अप होता है। तो फिर अगर किसी को रैली मिस भी हो गया होगा, तो फिर एक मेजर रेजिस्टेंस जब टूट रहा है, तब वहीं पे भी आप लोग एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वो जो है ना वो रैली फिर कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो सब शॉर्ट्स जो है वो धीरे-धीरे लिक्विडेट होगा पोजीशंस, तो मार्केट और डोमिनो इफेक्ट के कारण और ऊपर भागेगा, ठीक है। ये बीटीसी का हो गया। बीएनबी का प्राइस का हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या? BNB is करते हैं called सर? magic. BNB is called magic internet money. So BNB, FTT, OKX, all those are magic internet money. Let's not talk about those right now. Yeah, So yeah, yeah. I don't think it would be good enough.
क्योंकि इसके बारे में बात करके फिर वही है कि बहुत सारे यूजर्स जो है इसमें घुसने लगेंगे, तो फिर रहने देते हैं इसको फिलहाल के लिए। और इथेरियम का जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि तब शायद इथेरियम 2020 या फिर 2016-17 के आसपास चल रहा था, तो मैंने बोला था एक बार कि वो एक बार नीचे की तरफ जाएगा, फिर जाके वो ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, बिना नीचे हुए, क्योंकि चार्ट पैटर्न वो आपको बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ तक गया था 1930, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके फिर से अभी ये 2000 के ऊपर आके फिर यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही होता है कि अगर, और मैंने तब भी एक चीज बोला था कि अगर 2000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वहां पे एक स्मॉल टाइम फ्रेम में आप लोग शॉर्ट पोजीशंस की तरफ देख सकते हो, जो स्पेशली एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन लोगों के लिए। तो फिर उन लोगों को भी अब काफी अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिल गया होगा। 2000 से आप मान सकते हो कि 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट मिल गया होगा। तो अभी इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है, जब तक ये इसका रेजिस्टेंस आप मान सकते हो 2150 इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट रहेगा इथेरियम में भी। तो यही है फिलहाल के लिए मार्केट में, तो यही सिनेरियो नजर आ रहा है। क्रिश, आपका कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि अगर बाइनेंस और अदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जैसे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ regulations, because of apparent hacks, whatever you can say, तो जैसे हम लोगों ने देखा था FTX क्रैश के बाद कि काफ़ी सारा ट्रेडिंग ऑन चेन मूव कर गया था यूजिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या स्वैप्स। तो आपको अभी क्या लगता है कि मार्केट विल go in that direction? A lot of users will try to use decentralized swaps once again, या फिर people will keep on continuing using Binances? Like, what is your personal opinion? As far as my opinion is concerned, I think people are emotionally attached to Binance somehow, and it will take some time to detach themselves from that emotion. ये तो एक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी एक बार सोशल मीडिया अगर देखोगे तो काफी इतना सारा न्यूज आया है, पेनल्टी लगा है, जेल जा सकते हैं, इतना सब न्यूज के बाद भी जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि 30% यूजर्स भी वहां पे अकाउंट वगैरह क्लोज करके या फिर दूसरा कोई वॉलेट में डिस्क में अपना एसेट्स को ट्रांसफर करके कुछ नया प्लानिंग वगैरह बना रहे हैं। अभी भी जो यूजर्स है वहीं पे बैठे हुए हैं कि हाँ चलो नया सीईओ तो अपॉइंट हो गया एटलीस्ट, तो अभी ऑपरेशन जो है ये रुकने नहीं वाला है, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन वही है कि एक मतलब एक चीज सीधा तरीके से चल रहा था, हालांकि बहुत सारा गड़बड़ था, लेकिन उसके बाद न्यूज आया सामने, उसके बाद भी आप चेंज नहीं हो रहे हो, तो फिर ये दर्शाता है कि आपने इतना दिन से मार्केट में मतलब जो कंट्रीब्यूशन रहा है आपका, उसका कुछ वैल्यू है, ठीक है, एटलीस्ट यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जल्दी नहीं जाने वाला है जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट बड़ा ना आ जाए मार्केट में, और वो भी रेगुलेटेड स्पेस में। तो फिर ऐसा अगर कुछ आता है आने वाले दिनों में, तब धीरे धीरे जो है यूजर्स शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दो चीज है, एक तो है डेस्क में वो लोग हैबिचुएटेड नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, उसका यूजर इंटरफेस जो है वो काफी मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है, आप बोल सकते हो, नॉविस ट्रेडर्स है उन लोगों के लिए। तो फिर वो लोग वही पसंद करेंगे ना कि जो हैबिचुएटेड है इतना दिन से जिस पैटर्न में कर रहे थे उसी पैटर्न में कंटिन्यू करते रहे। What about you, Sam? I think like normal retail investors want all thing in the same place basically. जिसके लिए मैं भी कभी-कभी देखता हूँ कि Binance why it came up so big is because it's giving all the things on the same platform. It's like a super app जो उन्होंने बना दिया अभी, where you can go in, you can post, you can do staking, you can do INR, P2P, you can buy on spot, you do futures. So सारे things एक ही ऐप में हो रहा है, and you don't have to move to other places. And all the major altcoins are also present on the Binance application. So basically वो easiness देता है यूजर को, और उनको लगता है कि ठीक है मेरे को अलग अलग जगह घूमना नहीं पड़ेगा, मेरे को कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं देखने पड़ेंगे, so I'll do one KYC and I can get everything at a same place. And coming to your question, तो कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे Binance का, so I got a chance to look at the net inflows and outflows for yesterday. So around 1.9 billion के आसपास funds move हुए, like outflows हुए on major exchanges, and only 300 million के आसपास funds दूसरे exchanges पे move हुए. So around 1.5 to 1.6 billion के funds is either on setting on a wallet or it's been traded on a DEX. So
धीरे धीरे आई थिंक पीपल विल स्टार्ट मूविंग टू, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे, ऑन वॉलेट्स एंड अदर प्लेटफॉर्म, एंड देयर विल बी सम एप्लीकेशंस व्हिच विल हेल्प यू टू जस्ट transfer the money to exchange trade and then put it back on the wallet. So I think that is what we are looking forward, because 1.5 billion कहाँ चले गए कल किसी को नहीं पता Yeah, I after the think news. it's on chain. It's not like कहीं गायब हो गया, but I think No, it's no, like I'm just saying like it's not getting into a centralized exchange now, because it's obviously on some clear. decentralized. Yeah. तो So it's not गायब हो गए, but it's not yeah, coming back to it's on centralized chain. exchanges. Yeah. Not soon, but maybe later on. यहाँ पे So एक्चुअली एक चीज नोटिस करना होगा क्रिस, जो जितना वॉल्यूम मूव हुआ है ना, वो कितना एड्रेस में मूव हुआ है, तो उससे एक जो है ना कि डेंसिटी पता पता चल जाता है कि रिटेल डेंसिटी है या फिर इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि अगर मल्टीपल और बहुत सारा एड्रेस में मूव हुआ होगा तो फिर तो आप उससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि क्या हुआ है, राइट? इंस्टीट्यूशंस कभी भी अपना फंड एक्सचेंज पे बैठा नहीं रखते हैं, लाइक वंस दे ट्रेड दे विथड्रॉ टू देयर ओन नॉन कस्टोडियल वॉलेट. सो इंस्टीट्यूशंस कभी भी अपने फंड्स को अभी कोई एक्सचेंज में नहीं डालते. लाइक आई थिंक मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था गैलोइस कैपिटल बोल के. तो गैलोइस कैपिटल मेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय शॉर्टिंग लूना, पर उन्होंने करीब 200 मिलियन के आसपास FTX में रखा हुआ था. सो वंस FTX crashed, Galois, you know, shut their business. So I think most institutions have learned their lessons from it. A lot of market makers, बड़े-बड़े market makers, I'm not going to name any names, but has lost a lot of money. तो to the point कि काफी लोगों ने ये सोचा था कि they will go declare bankruptcy, but for some reasons they did not do it. तो अभी भी अगर मार्केट में वैसा कुछ मतलब कुछ ऐसा होता है कि योर मनी गॉट स्टक इन सम एक्सचेंज, there are few institutions or especially in the market making space they might go bankrupt. So generally in other institutions like HNIs या फिर funds, hedge funds, they will not put money in any exchanges right now. So mostly I think it's retail money which is going out. And mostly I would say these are smart money, because these people know what to do. If you're just putting your money in Binance hoping कि 5 साल बाद खोल के देखेंगे कि क्या होता है, तो that is not the point here. तो चलिए जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर आर फ्यू एक्सचेंजेस व्हिच गॉट हैक्ड. तो DYDX गॉट हैक्ड 9 मिलियन, दे लॉस्ट $9 million. अभी उनके पास $13.5 million है remaining. So it will need another like 1.5 hacks of similar size to bankrupt DYDX. So this was the risk I had been talking before with Sam and Shovik कि जब आप नए एक चेन खुद बना के मूव कर रहे हो, of course you are looking to get greater efficiency, but उसके साथ ही साथ जब आप कोड लिख रहे हो तो running a chain and running an exchange are very different things. तो देर माइट हैव बीन वल्नरेबिलिटीज जिसके कारण ये हुआ है. एंड उन्होंने कहा है डायरेक्टली कि दे आर नॉट गोइंग टू पे एनी बाउंटीज और नेगोशिएट विद द अटैकर. तो डायरेक्टली FBI के साथ मिलकर वो काम करेंगे, विच इज़ फाइन. बट देन एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, व्हाई वुड यू वांट टू वर्क विद a centralized company when you are in problem, right? So Yes, So I I think you think, are on. yeah, I think he like dexes are also not that safe anymore, right? क्योंकि उसके साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो खाइबर स्वैप भी हैक हुआ है अराउंड $47 million. एंड हैकर ने कहा है कि आई एम टू टायर्ड, आई विल स्टार्ट द नेगोशिएशन सून. तो मतलब बेसिकली ही इज सेइंग दैट ही इज गोइंग टू कम बैक विद एन ऑफर, शायद 10% या 20% ही वांट्स टू कीप, एंड द रेस्ट ही विल रिटर्न. क्योंकि फॉर द हैकर्स इट्स नॉट फीजिबल एनीमोर टू कीप ऑल द मनी. क्योंकि अगर आप पैसा रख लेते हो, सो सूनर और लेटर अगर वो USDT या USDC में है, दोज विल गेट ब्लॉक्ड. अगर आप कोई भी मिक्सर यूज करते हो, सो योर एड्रेस विल बी ट्रैक्ड. probably if you are using MetaMax, they can still track you using MetaMax. तो मतलब it's not like 2017 की you cannot be tracked, right? Or it's not like 2015 की like you can vanish with $1 billion like Rua Ignatova did. So things are much more different right now. तो अगर हैकर भी कोई हैक करता है तो they are waiting for
a good term for negotiation कि हाँ I will take 5% or 10% or 20% or 15% of the total fund. And generally most of the time they are invited to become like security analysts क्योंकि these are the best people to plug your holes. And if you get them on your side, it means you are winning the war against other hackers. So Shovik is laughing, but I think this is the case and this is the true scenario right now. ऑब्वियसली ऑब्वियसली यही सिनेरियो होना चाहिए ना कि जो मतलब इतना बड़ा बग जो है वो फिर इतना बड़ा होल को जिसने फाइंड आउट किया है तो उनको ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं. तो आई थिंक दिस टॉपिक विल कंटिन्यू कि DYDX ने सही काम किया था कि नहीं, बट इफ दे सर्वाइव probably they will write history because history is always written by survivors, but they're like halfway there when they might not survive. 1.5 like $13.5 million कोई बड़ा बात नहीं है. It can get hacked, it can get into some trouble, and if they don't have that money they have to declare themselves bankrupt. So that's a big blunt like big gamble that they have taken. और जब गैम्बल की बात करते हैं तो आई थिंक अनदर बिग गैम्बल बाय सर्कल हियर. सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग USDC ब्रिजिंग USDC स्टैंडर्ड. सो जैसे हम लोगों ने एक बार कहा था शायद कि हाउ USDT is fragmented on multiple chains and how it's very difficult for people to use one chain and then move to another chain because all their asset is on one chain. तो by this standard protocol the circle is bringing कोई भी कोई भी नया चेन डिप्लॉय होता है मार्केट में जैसे सुई या एप्टोस which does not have USDC native minting, they can create bridges which can then bring money from other platform to Aptos or Sui. So they don't have to incentivize third-party bridges. They can actually build it themselves, right, as part of the whole protocol. So this will make movement of USDC across various chains quite easy. Apologies for the sound behind me. I think you're hearing some kind of sound. So today is the immersion of the last puja, I think this year, Jagannath Puja, and because of that, some sounds behind. So yeah. So moving on. Uh, and okay, before moving on, so I think this is a very interesting case because जो fragmentation है liquidity का वो इससे solve हो जाएगा if you are able to actually do bridging using standard USDC protocol. और ब्रिजेस का जो बिजनेस है वो भी गायब हो जाएगा बिकॉज ब्रिजेस एक्चुअली एक्ट एज escrow कि आपने वहाँ पे USDC मूव किया ट्रॉन से एंड देन यू आर मूविंग दैट USDC टू Ethereum. So you may not get the same, not USDC but same kind of BTC or Ethereum. So there's always a difference between ETH and WETH or ETH BTC and WBTC, EBTC, whatever it is. So liquidity wise I think is a good move, but Sam, do you think having multiple bridges across newer chains is going to make your USDC more vulnerable? Because at the end of the day, Ethereum is Ethereum because for the last I think 7, 8, 9 years they have been very robust. They did not get hacked. They did not have issues like Solana ki suddenly band ho gaya, and then they also did not have issues like BNB chain ki phone call kar diya and chain band ho gaya. So bridges on these kind of different chains are actually a good thing for you, or do you think that there's like the risk is increasing now? Also DeFi में काफी सारे रिस्क है, but bridges I think is one of the biggest risk क्योंकि it's like a honey pot. सबको पता है if you can break it you'll get a lot of money out of it. तो risk reward ratio काफी high होता है. So what do you think कि इससे क्या होने वाला है, like क्या हो सकता है? थिंक लाइक जो DeFi में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ट्रेड करते हैं, सो उनको तो रिस्क से तो इश्क होता ही है because they know that they are dealing with something where they may be hacked or का पैसा गायब हो सकता है. And there are lot of incidents that I read on Twitter and other places जहाँ पे people have lost all their money made in the bull run or they have put in, and they have to somehow, somebody got it back and some people have lost it again and they have to start from zero.
सो ब्रिजेस का एक फायदा वो हो जाए कि जहाँ पे नेटिवली नहीं मिंट होता है, जैसे हम लोग भी पिछले दिन बात कर रहे थे कृष्ण, कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, अभी इतने सारे L2s आ रहे हैं, इतने सारे नए ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं, तो सब में जो भी स्टेबल कॉइन्स है वो नेटिवली मिंट नहीं हो रहे, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम टू गेट मास अडॉप्शन। सो अगर ब्रिजेस है तो वो कई हद तक सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज यू कैन ब्रिज इट टू न्यू ईवीएम और L2s। बट अगेन द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने कहा, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। और अगर आई थिंक अगर वो चीज जैसे आपने बोला, अगर ब्लॉकचेन खुद ही बना रहा है देयर ओन ब्रिज, so that can be relatively more secure than other other projects building on top of that blockchain bridge. So हाँ. let's see So क्या होता है. let's see. I think it's a debatable thing to question. Um, so yeah, Gemini and Genesis both are embroiled in battle according their preferential transfers. So जैसे आपको पता है कि DGC group is in trouble because of Gemini declaring bankruptcy, and you know Gemini uh, is suing Genesis because of that. तो काफ़ी लिक्विडिटी विंकलवर्स ब्रदर्स ने खुद जेमिनाई एक्सचेंज में डाला है खुद के पॉकेट से, so that all the users are not in trouble. But I don't think they have put in like $700 million roughly, which is the figure here. I think they have put like somewhere like 100 $150 million for liquidity purposes, but most of their funds are stuck. तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है जो कि हम लोग बाद में भी आएंगे कि GBTC इज कन्वर्टेड टू BTC ETF. So GBTC is like a derivative or like a secondary instrument or a wrapped BTC which is being offered by Gemini. And as soon as they convert this GBTC to BTC, I think a lot of their problems and liquidity will be solved because they actually have the BTC with them, so they can sell it on the open market. And also this is selling at a discount, तो काफ़ी प्रीमियम भी मिल सकता है अगर कोई अभी इस मोमेंट में GBTC खरीदना चाहता है, तो इट्स लाइक अ गैम्बल. इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक इट. So this is happening, and इसके साथ ही other happenings which are there is pancake swap. They are becoming much more decentralized finally. So why do I say that? Because इसके पहले, even if you are using pancake swap, it's more like a it was not really very decentralized. So now there is governance power, there is cake emissions, voting incentives, etc., which is being put in. So ड्यू टाइम कि अदर डेक्सेस को यही इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज करना चाहिए अपने पावर को, सो दैट यू डोंट बिकम इररेलेवेंट. तो लेट्स सी कि कितने सारे डेक्सेस इस मॉडल को फॉलो करते हैं, बट आई थिंक इज अ मॉडल विच विल इंक्रीज ओनरशिप, जो कि काफ़ी ज़रूरत है क्रिप्टो स्पेस में. एंड जैसे मैंने कहा था पहले कि खाइबर साहब गॉट hacked for 47 million. So here is that news. It's one of the older swaps, but unfortunately they suffer this. एंड इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रादर डू इट राइट नाउ. तो बेसिकली क्या है कि GBTC एक डेरिवेटिव है जो कि बिटकॉइन प्राइस को फॉलो करता है, एंड दे होल्ड दैट मच अमाउंट ऑफ बिटकॉइन ऑन स्पॉट. तो राइट नाउ द टिकर फॉर GBTC is trailing BTC by certain percentages, and it's always at a discount. तो अगर ग्रे स्केल सक्सेसफुल होता है इस ETF में टू कन्वर्ट देयर GBTC टिकर टू BTC, मोस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, क्योंकि उनका जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज नॉट asset amount, it is liquidity. So if people don't sell their GBTC for BTC, they don't have the money, right? So that is their problem. So once they have the conversion, then they will already have the BTC. So if people don't want to sell it, they can sell it themselves because they already have it in their treasury. So that will be the good thing, and that will probably bring the whole Genesis group or DGC group out of the mess. सो इसी के साथ हम लोगों का मोस्टली सारा न्यूज़ कवर हो चुका है. एक आखिरी न्यूज़ बाकी है. तो मैंने आखिरी न्यूज़ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि किस तरीके से
regulations country specific हो जाएंगे, and country specific होने के बाद Apple and Google Play will start interfering because the country will ask them कि hey, why are you allowing Binance to be available for Indian users in their app? आप जाके वेब ब्राउजर यूज कर सकते हो पर you cannot get it in the app store. So I think this is the one of the first cases that is happening. Apple is being sued for blocking crypto tech for P2P payments. तो ये एप्पल ने क्यों किया है? क्योंकि जब भी आप एप्पल पे को यूज़ करते हो कोई भी ऐप खरीदने के लिए, जनरली 30% ऑफ दैट गोज टू द लाइक गोज टू Yeah, एप्पल, that's called in-app purchase. 70%, हाँ इन ऐप परचेज में Purchase fee. Yeah. 70% चला जाता है इसके पास जो भी डेवलपर है. तो इसीलिए काफ़ी सारे गेमिंग कंपनीज ने आई थिंक लास्ट टाइम एपिक गेम्स ने भी इसका विरोध किया था एंड दे वेंट आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर सम टाइम. तो यहाँ पे एप्पल ने P2P पेमेंट्स को ब्लॉक किया है सेइंग दैट इट्स वायलेटिंग देयर पॉलिसीज. So this is just the start. Soon, I think in the next 3, 4, 5 years, you will see uh, a lot of apps that you can find now. जैसे Binance हो गया, जैसे Coinbase हो गया, Kraken हो गया. None of them have any license in India. So Indian government will make up a law, or probably will make up a law कि if you are not based in India, if you are not paying taxes, you are not following the Indian regulations and laws, Apple को वो कह के या Google को कह के they will block it. And I also think, this, yeah, Krish, I think there is one another possibility in case of India. We have our UPI developed, and also now currently government is promoting RuPay debit card and credit card also. नहीं नहीं नहीं, They are giving ये credit facilities with the RuPay card. So we डेबिट have क्रेडिट का बात, multiple options. Sorry. ये ये डेबिट क्रेडिट का बात नहीं है. ये बेसिकली है कि No. अगर We have आपका लाइसेंस, other alternate payment systems. That's what I'm talking about. So India में मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है. तो आई थिंक रिसेंटली इंडिया में कोई एप्पल एंड गूगल स्टोर के लिए एक दूसरा इंडिया स्टोर, भारत स्टोर ऐसा कुछ लॉन्च किया गया था, जहाँ पे लाइक इफ यू आर एन इंडियन ऐप यू कैन यूज दैट एंड यू कैन यूज यूपीआई एंड अदर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस इन दैट. तो दैट्स लाइक अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन where you can use this. So probably it's available on Android. मुझे नहीं लगता कि Apple इस तरीके के ऐप को Apple में सर्टिफाई करेगा, but it's probably available on Android. तो and see, Apple का जो गेम है that is not based on this. So Apple का जो basic गेम है that is, और basic जो मोट है that is their mobile phone or that is their hardware, right? तो हार्डवेयर अगर आप एक बार खरीद लेते हो, सो यू गेट लॉक्ड इनटू द एप्पल इकोसिस्टम बिकॉज यू कैन यूज द फोन, यू कैन यूज द टैब, यू कैन यूज द Mac, whatever you want to use, you can use all these devices using Apple, and it is very secure, like very very secure. So generally you will not move out of the system, and then once you cannot move out of the system or आप नहीं जाना चाहते हो, you start buying apps, you start paying money using Apple Money, Apple Pay, etc. And that is where they earn a lot of money. Of course, they earn money from the phone also, but phone is like golden handcuffs, like सोने की हथकड़ी, and you don't even know that. So that is what Apple is doing. So it's built a ecosystem जहाँ पे उसका phone जो है, that is the gateway. Once you buy that phone, you are inside and you are in a dreamland where everything is connected together. और जो भी एप्पल एंड विंडोज एक्सेट्रा यूज करते हैं, मतलब लिनक्स, विंडोज और कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, सो यूजिंग एप्पल इज वेरी कन्वीनियंट, वेरी सिंपल. तो इसीलिए कोई भी बड़े टेक कंपनीज में यू विल सी मोस्ट ऑफ द कंपनी पीपल एंड रिच टेक कंपनीज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग एप्पल बिकॉज दे हैव एप्पल आईफोन, दे हैव आईपैड, दे हैव मैक. एंड जो भी अलग अलग है, मतलब smaller companies and upcoming startups, they don't use Apple because it's costly to maintain and the things are very costly, the subscriptions are very costly. So that is the point. And this is just one example कि Apple क्या करेगा आगे या क्या किस direction में जा रहा है. And this is something we have already told before कि इस तरीके से regulations आएंगे and you cannot stop it. So with that, I think we end for today, and Yep. let's get So going then. And Sam has some information, so let's let Sam discuss that,
And yeah, Shavik can also add Sure. in something if he wants. So basically, as we are talking about the P2P thing, Apple has talked. So, and that's a very rising problem in India, and we have seen like a couple of months back, many bank accounts being frozen, and people getting stuck doing P2P, and still now people are confused about how to do P2P and what is the safe platforms where we can get a good rate and it's compliant and you can trust where you will get the money, you will not be scammed. Once you put in money, the exchange will go. So that's where we are planning to do a session next week on Tuesday around the same time. So we'll put out the posters and other details soon. So you can join in, guys, and we'll discuss about like how you can solve the problem of P2P and what are the do's and don'ts which you have to follow. And we'll also have some special announcement for the people who will be joining in on that day. Uh, so stay tuned on that and hoping to meet you guys pretty soon on Tuesday. So that's like just a advance announcement that we're gonna make. And do invite your friends, families, and others who have been scammed in P2P so that they get the knowledge and they don't fall to any trap again. So that's it from my side. And Shobhi, Krish, if you want to add something, we can do यस that. डेफिनेटली हम लोग ये जो P2P के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो फिर इसका नोटिफिकेशन जो आप लोगों को हम लोग A2Z का हर एक सोशल मीडिया चैनल्स में मिल जाएगा। आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है कि कैसे मतलब किस तरह से आप लोग सेफली P2P कर सकते हो या फिर कुछ भी सवाल जो कि आपके मन में आ रहा है P2P से रिलेटेड, वो डायरेक्टली आप लोग लाइव सेशन के दौरान हम लोगों से पूछ सकते हो। आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल होगा हमारे यूज़र्स के लिए और बाकी बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए जो ऑलरेडी P2P के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करते हैं। तो दैट्स ऑल। So thank you guys for watching in and joining in this live stream. Hope you got some knowledge about the crypto markets and this week's updates. Stay tuned as we keep on having this kind of sessions every week where we discuss about market trends and the technical analysis. So if you have still not followed us, do follow us on all the social platforms available or where you are watching from. And till then, we'll take a goodbye from you and we'll be available again next week with all this news ki jholi and technical analysis that we have. So thank you everyone for joining in. Bye bye. Have a nice weekend. बाय।